Hello students, good morning and welcome to my new video. देखो स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास से पढ़ाई थिला रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस. ओके स्टूडेंट्स, सो आज हमें देखिबा गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंसेस इन सीरीज. ओके स्टूडेंट्स, देखो रेजिस्टेंसेस वेरी वेरी इंपोर्टेंट. रेजिस्टेंसेस इन सीरीज कनेक्शन. ओके, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज. तो फर्स्ट हमें देखिबा डायग्राम. फर्स्ट हमें डायग्राम ड्रा करिबा. तो डायग्राम ड्रा करो समझते. दैट इज suppose this is first resistance, suppose this is second resistance, suppose this is third resistance. Okay students, the battery connection दिया positive negative. Okay students, suppose this is A terminal, suppose this is B terminal. Okay students, A and B terminal, it is positive negative. B है potential difference. B टा माने कौन? B होची potential difference. इटी I amount of current जीवा देखो, I amount of current. इटी कौन है potential टा? That is V1, V2, V3 potential. Okay, it is not that is R1 resistance, first resistance, R2 is the second resistance, then R3 is the second resistance. Okay, this is the symbol of resistance. This is the diagram of resistance. Okay, so देखो this is called this diagram all about resistances in series. Okay students, देखो the theory कौन है वो देखो, that is resistances are said to be connected in series. Okay students, connected in series. देखो students कितने बेले कहा जीवो resistances are said to be connected in series if same current passes through all the resistance. देखो students very simple, all the resistances. যদি সবু রেজিস্ট্যান্স যদি মনে করো সেম কারেন্টটা ফ্লো হেলা মনে করো, সেম কারেন্টটা কোন আই অ্যামাউন্ট কারেন্টটা ফ্লো হচ্ছে দেখো, সেম অ্যামাউন্ট কারেন্টটা ফ্লো হেলা মানে দ্যাট ইজ কল্ড কোন সিরিজ কানেকশন. রেজিস্ট্যান্সেস আর সেড টু বি কানেক্টেড ইন সিরিজ ইফ সেম কারেন্ট passes through all the resistances. Okay students, next আমি দেখিবা. ওকে, নেক্সট কেতরা R1 R2 R3 তিনটা রেজিস্ট্যান্স লাগিছে সেই বিষয়ে লিখিবা. দেখো নেক্সট আমি দেখিবা three resistances. Suppose three resistances R1, R2 and R3 are connected in series. Okay students, देखो three resistances कौन R1, R2 and R3 are connected in series. Okay students, next हम देखिबा if R is the resistance and V is the, suppose V is the total potential difference. Okay students, देखो total potential difference across the combination. R को कौन नो, R माने होची resistance and V माने होची total potential difference of the combination. Then कौन हबो देखो, then हबो देखो फॉर्मूला गुड अछि देखो, that is एठी V1 रो फॉर्मूला हबो देखो IR1. Okay students, V1 is equal to IR1. तो V2 रो वैल्यू कौन हबो I into R2. सो V3 रो वैल्यू कौन हबो देखो I into R3. इक्वेशन 1 दे दिया टाको, गिव इक्वेशन नंबर 1. देन एटी टोटल पोटेंशियल वैल्यू केते हबो देखो, ये टोटल पोटेंशियल रो वैल्यू हबो देखो V is equal to V1 plus V2 plus V3. इक्वेशन 2 दे दियो, टोटल पोटेंशियल वैल्यू कोन हला V is equal to V1 plus V2 plus V3. देन हमें जानि छु V रो फार्मूला कोन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equal to I into R. देखो कोठेटा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रो फार्मूला V is equal to I into R. V माने टोटल पोटेंशियल, R माने रेजिस्टेंस, V is equal to IR. एबे कोन कर देखो इक्वेशन 1 आउ 3 को इक्वेशन 2 रे पुट कर देबा. देखो V is equal to IR कोठा आसिला अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equal to IR. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें देखो नेक्स्ट में पुट करबा यूजिंग इक्वेशन 1 and 3 इन इक्वेशन नंबर 2. देखो स्टूडेंट्स, दैट इज 1 आउ 3 को हम 2 रे पुट करबा. ओके स्टूडेंट्स, लिखि दियो यूजिंग इक्वेशन 1 and 3 in equation number 2 we get हमें पाइबा. ओके कोन पाइबा देखो, दैट इज V रो वैल्यू कोन I into R
से भाया V1 रो वैल्यू केते IR1 V2 रो वैल्यू केते इक्वेशन 1 रे IR2 से V3 रो वैल्यू केते I into R3 ओके स्टूडेंट देखो एटा V IR इज इक्वल कोन हला IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 ओके स्टूडेंट्स तो सेकंड रो I टा कॉमन जीवा देखो कोन रहला R1 प्लस R2 प्लस R3 I कैंसल देखो RS कर दिया सीरीज एस फोर सीरीज RS इज इक्वल टू R1 plus R2 plus R3 give equation number 4 this is the final answer okay students तो এটা কোন হলো দেখো RS is equal to R1 plus R2 plus R3 that is কোন হবে that is লিখি দে conclusion resistances are connected in series if resistances connected in series then the total resistance or net resistance koi paro total resistance or net resistance total resistance of the combination okay total resistance of the combination is equal to sum add kore dekho sum echi sum of their individual resistance okay student dekho very simple resistances are connected in series if resistances are connected series series connection habo resistance connected habo dekho if resistances are connected in series then the total resistance of the combination is equal to sum of their individual resistance eta equation 4 conclusion dekho this is all about resistances in series okay students formula ko RS is equal to R1 plus R2 plus R3 तीनटा resistance connect माने connect लिखि देखो तीनटा resistance connection होचंती that is R1 R2 and R3 तीनटा resistance तो formula कोन हला RS is equal to R1 plus R2 plus R3 okay students next हम देखिबा resistances in parallel very very important next हम देखिबा resistances in parallel बा कहि पारो parallel connection okay resistance in parallel okay student तो फर्स्ट हम देखो डायग्राम कर देबा तो द डायग्राम देखो एठी फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 सेकंड रेजिस्टेंस R2 थर्ड रेजिस्टेंस R3 R1 R2 R3 ओके स्टूडेंट्स देखो डिस्ट्रीब्यूटेड गुड वर्टिकल करबा देखो पॉजिटिव नेगेटिव हला रिपीटिव कनेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव v टा पोटेंशियल डिफरेंस ओके I अमाउंट कोनटा फ्लो हेबा देखो दैट इज इटा कोन हेबो I1 I2 I3 रे पोटेंशियल कोन हेबो एठी पोटेंशियल v हेबो सब जगह रे v सब जगह रे कोन पोटेंशियल सेम v ओके देखो स्टूडेंट्स एठी कोन हला टर्मिनल सपोज दिस इज a टर्मिनल सपोज दिस इज b टर्मिनल ओके क्लियर एठी कोन हला देखो एठी कोन से केस रे थिला देखो सेम करंट ओके सेम करंट फ्लो होतला एठी कोन हेबो पैरेलल रे डिफरेंट करंट फ्लो हेबो देखो डिफरेंट करंट कोन फ्लो हेबो डिफरेंट अमाउंट करंट फ्लो हेबो तो कोन हला देखो डेफिनेशन दैट इज resistances are said to be connected in parallel if different current देखो स्टूडेंट्स if different current flows through them or flows through all the resistances clear student देखो resistances are said to be connected in parallel if different current flows through all the resistances okay students then लिखि दियो देखो सपोज देखो एठी हमें v इज इक्वल नबा सपोज v इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस pd माने पोटेंशियल डिफरेंस और r माने हो सपोज रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ओके स्टूडेंट्स देखो तेबे कोन हला एठी फार्मूला देखो v रो फार्मूला हि जीवो IR1 इज इक्वल सेम करंट माने सेम करंट फ्लो है डिफरेंट करंट देखो v इज इक्वल कोन हबो I1 R1 करंट डिफरेंट हला देखो v इज इक्वल टू
I1 R1 इज इक्वल कोन हबो I2 R2 इज इक्वल टू I3 R3 कोन पाई ना देखो एठी करंट डिफरेंट और पोटेंशियल वैल्यू कोन सेम तो एठी I1 रो वैल्यू कोन ना देखो I1 रो वैल्यू देखो V/R1 तो I2 रो वैल्यू कोन हबो V/R2 तो I3 रो वैल्यू कोन हला V/R3 देखो स्टूडेंट्स गिव इक्वेशन नंबर 1 एटा इक्वेशन 1 दे दियो गिव इक्वेशन नंबर 1 ओके स्टूडेंट्स I1 रो वैल्यू कोन हला V/R1 I2 रो वैल्यू कोन हला V/R2 I3 रो वैल्यू V/R3 ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखिबा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एठी I रो फार्मूला कोन हबो I रो फार्मूला हबो देखो दैट इज V/R मन रखो I इज इक्वल कोन हबो V/R गिव इक्वेशन नंबर 2 सिंस एठी करंट रो वैल्यू कोन हबो I इज इक्वल हबो देखो I1 प्लस I2 प्लस I3 फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ओके फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन पई टोटल करंट रो वैल्यू कोन हला I1 प्लस I2 प्लस I3 गिव इक्वेशन नंबर 3 ओके स्टूडेंट एबे कोन करबा देखो इक्वेशन 2 आउ 1 आउ 2 रो वैल्यू इक्वेशन 3 रे पुट कर देबा देखो दैट इज like it using equation 1 and 2 okay using equation 1 and 2 in equation number 3 we get put kar we get put kala pare that is I ro value kon habo I ro value V/R then I1 ro value kon hala I1 ro value V/R1 plus I2 value kon V/R2 I3 value kon V/R3 देखो स्टूडेंट इक्वेशन 1 और 2 वैल्यू पुट करा वाला एटी V/R एटी कोन V कॉमन जीवा देखो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ओके स्टूडेंट्स एबे कोन करबा देखो V कैंसिल हे जीवो V कैंसिल करो कैंसिल दिस दैट इज 1/RP इज इक्वल टू फार्मूला P फॉर पैरेलल दैट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 this is the final answer for parallel connection okay 1/RP is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 ओके स्टूडेंट तो इक्वेशन 4 दे दियो इक्वेशन 4 कंक्लूजन कोन हला देखो thus if the resistances are connected in parallel okay connected in parallel the reciprocal of resistance okay the reciprocal of resistance is equal to sum of their reciprocal of individual resistance okay individual resistances देखो स्टूडेंट वेरी सिंपल इक्वेशन 4 रो ही कंक्लूजन देखो thus if the resistances are connected in parallel the reciprocal of the total resistance the reciprocal of the net resistance okay reciprocal of the net resistance okay reciprocal of the net resistance what okay reciprocal of the net resistance okay net resistance is equal to sum of their reciprocal of individual resistance okay students देखो उत्तर देखियो thus if the resistances are connected in parallel the reciprocal of the net resistance is equal to sum of their reciprocal of individual resistances okay students this is all about resistance in parallel okay students next class से आउरे आपको पढ़िबा okay students जदि ए वीडियो जदि भल लागुछि माने काइंडली लाइक करो शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो और पखर थियो बेल आइकन को दबाई दियो ओके स्टूडेंट्स दी वीडियो जदि भल लागुछि माने काइंडली शेयर करो ओके स्टूडेंट्स बाय